solenoid आम लिखिपर ताकू circular form of solenoid is known as toroid. Note down करो. Circular form of solenoid is known as toroid. Toroid कहाँ को जाए सर्कुलर आकु जदि आमे बेंड आकु आमे सर्कुलर सेक्शन रे कन्वर्ट कर दबु ताकू ही टॉरॉइड को जाए. ओके बुझी पारलो. एबे आमे फाइंड आउट करिवु मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड कैरिंग करंट आई. एटा लिभेबा. ओके এই ফিগারটা ড্র করা সমস্তে. ড্র হয়ে গেল রাইট. ওকে ठीक है. थ्योरी लिखो. लेट टॉरॉइड हैज number of turns per unit length n. electric current I and magnetic field inside the toroid is B. Inside the toroid B. So line integral of then we can say line integral of magnetic field along this circle कितने हबो लाइन इंटीग्रल सिंबल कौन b डॉट dl लाइन इंटीग्रल. b डॉट dl b dl. so b dl cos theta line integral is equal to b dl
cos theta is equal to 0. theta is 0 कहीं 0 है किए कही परिबो 0 कहीं है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल सहित को भाया रिलेशन अच्छी एंगल 0 हम राइट देन कौन हम बी डीएल लिखिदेल बी डीएल cos थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज 0 that is angle between B and DL सो आंक भितर एंगल केते आसीबो 0 थीटा इज 0 एंगल बिटवीन B and DL बुझिला कि नहीं बी डीएल भितर एंगल केते आसीबो 0 कारण यदि आमे नबा बी रो डायरेक्शन एई भले आसीबो डीएल रो भी डायरेक्शन सेम ही आसीबो सो यदि आमे नबा यदि आमे एक सर्कुलर लूप नबा ताले को भले आसीबो बी डायरेक्शन और डीएल डायरेक्शन आर सेम एंड डीएल डायरेक्शन आर same that's why theta is equal to 0 बुझिबेला कि नहीं एटी बी रो डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे जीवो डीएल रो डायरेक्शन से डायरेक्शन रे ओके सो हमको एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टॉरॉइड कैरिंग करंट फाइंड आउट करर अछि सो बी डीएल cos थीटा सो बी आपको आम लिखिपर बी डीएल cos थीटा को आम कौन लिखिपर बी बाहर को धरी आसबू लाइन इंटीग्रल डीएल ओके बी यदि डीएल को लाइन इंटीग्रल करागला ताले ता वैल्यू केते आसीबो 2 पाई आर दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 b into 2 पाई आर बुझिएला कि नहीं बुझिएला ओके एटा इक्वेशन नंबर 1 पाइलु सो एटा को ऊपर एटा को लिखा जाउची सो जो मन नोट करिना नोट डाउन करिनियो सो हमें जानिलु कौन है लाइन इंटीग्रल फाइनली केते आसिला लाइन इंटीग्रल बी डीएल रो वैल्यू केते आसिला b into 2 pi r b into 2 pi r according to the ampere circuit law according to the ampere circuit law BDL line integral of BDL is equal to mu naught I बुझिएला कि नहीं mu naught I
I total I total. So I total केमिति फाइंड आउट करिबा I total केमिति फाइंड आउट करिबा लिखो for n number of turns n number of for n number of turns for n number of turns of toroid inside the circle inside the circle is equal to n into 2 pi r n into 2 pi r. So केते आसिला 2 pi r into n number of turns of toroid inside the circle केते number of toroid अछंती n number of. So total length केते आस जीवो n into 2 pi r. ओके ये हला total length. So केते current flow होउची total current inside केते आसीबो total current inside केते आसीबो total current inside the circle केते आसीबो total current inside the circle केते आसीबो की कहि परिबो I total n into 2 pi r n into 2 pi r into I n into 2 pi r into I एटा हला I total एटा हला इक्वेशन नंबर 2 बुझिएला कि नहीं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 कौन इक्वेशन नंबर 1 रे कौन कहला कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड रो लाइन इंटीग्रल केते आसीबो b dl is equal to b into 2 pi r according to the ampere circuit law b dl is equal to mu 0 I times I total. ओके I total केते आसीबो I total एठी केतुटा सर्कल अछि पर यूनिट लेंथ रे सपोज n नंबर ऑफ कौन अच्छी सपोज कौन n नंबर ऑफ टर्न्स अच्छी. सो गोटे टर्न रे केते करंट फ्लो होची I ताले n नंबर ऑफ टर्न्स रे केते करंट फ्लो होबो I टोटल केते होबो n into 2 pi r into I. यदि गोटे टर्न्स रे I करंट फ्लो होची ताले n नंबर ऑफ टर्न्स रे केते करंट फ्लो होबो केते फ्लो होबो करंट n नंबर ऑफ टर्न्स रे n into 2 pi r into I एटा बुझियला n into 2 pi r into I. So इक्वेशन 1 और 2 रु हमें कौन पाइलु इक्वेशन 1 एंड 2 रु हमें पाइलु इक्वेशन 2 टा को लिखि दबा हमें I total is equal to I total is equal to n into 2 pi r n into 2 pi r into I n into 2 pi r into I total है n into 2 pi r into I. This is the
सेकेंड इक्वेशन ओके सो दीटा इक्वेशन को आम एटा लिखि दउछु सो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किट लॉ according to the ampere circuit law according to the ampere circuit law we know that ampere circuit law रे कौन कहला line integral of bdl mu 0 times I total inside बुझिएला सो b टोटल केते अछि b लाइन इंटीग्रल कले केते आसीबो b into 2 pi r is equal to mu 0 I टोटल केते अछि n into 2 pi r into I n into 2 pi r into I so finally magnetic field केते आसी जीवो magnetic field आसी जीवो B is equal to mu 0 2 pi r cancel mu 0 n I B is equal to mu 0 n I this is the magnetic field inside the toroid okay this is the magnetic field inside the toroid एटा फाइनल आंसर हमर थिला सो एटा को हम इक्वेशन 3 दे दोचे ये थिला टॉरेड विषय कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन हबो डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट और डायरेक्शन कौन हबो डायरेक्शन हबो अलोंग द टेंजेंट along the tangent एतिक हो गला नोट डाउन एबे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखिबा सो लिखि दोछि एतिक सो इंपोर्टेंट पॉइंट्स एबे नोट डाउन करिवो टॉरेड बुझियला कि नाही यदि किछि डाउट हैला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो सो दैट कि हमें तुमको कमेंट रे देई परिवो रिप्लाई सो एबे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिनियो जोड़ा कि हेल्पफुल हबो एग्जाम पाई सब डेरिवेशन वेरी इंपोर्टेंट आउ सबुर शॉर्ट फार्मूला इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल सेक्शन ओके इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखो इंपोर्टेंट पॉइंट्स किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स अच्छी ताको अभी नोट डाउन कर इंपोर्टेंट पॉइंट्स नंबर 1 एम्पियर सर्किट लॉ that is line integral of bdl is mu 0 I when b is directed along tangent to the every point tangent to the
every point tangent to the every point on a closed curve on a closed curve on a closed curve then कौन हवा BL is equal to mu 0 I BL is equal to mu 0 I सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड पॉइंट लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड at a point will और दीटा पॉइंट लिखा at a point will inside the solenoid B is equal to mu 0 ni B is equal to mu 0 ni second point लिखो at either end of solenoid that is B at end कितना आसीबो half mu 0 ni where n is number of turns दीटा पॉइंट लिखी देल 3 नंबर पॉइंट लिख मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid magnetic field inside a toroid कितने आसला मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu 0 ni magnetic field outside the toroid B is equal to 0 outside the toroid is 0 तीनटा पॉइंट नोट डाउन करिनियो सो ये थिला ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड एम्पीयर सर्किट लॉ एंड टॉरेड सोलेनॉइड विषय तीनटा पॉइंट राइट सो देखो कौन होची मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड रे किता आसुची इनसाइड सोलेनॉइड रे भी आसुची केते mu 0 ni और टॉरेड रे भी केते आसुची B is equal to mu 0 ni बुझियला ओके एटा इनसाइड दी टॉरेड आउटसाइड रे केते आसीबो B is equal to 0 आउटसाइड रे केते आसीबो 0 आसीबो ये आइदर एंड रे केते आसीबो माने B एंड रे केते आसीबो हाफ ऑफ mu 0 ni बुझियला ओके सो लिखे भाई तीनटा पॉइंट
ओके लिभेबा वीडियो को जो माने देखुच पॉज करिकी तुम बुझी पारिबो राइट सो दैट की लिभेबा ना नोट डाउन करी नियो ओके सो एबे आमे जिबा नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज फोर्स इन ए मूविंग चार्ज फोर्स नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स लिख नोट डाउन कर नेक्स्ट टॉपिक है कौन फोर्स फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इनसाइड मूविंग चार्ज inside the magnetic field inside the magnetic field inside the magnetic field force on a moving charge inside the magnetic field suppose मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करछि एक्स एक्सिस रे ये गोटे चार्ज मूविंग करछि विथ एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस ताले आ कंपोनेंट कोन आसीबो v sin थीटा आउ एपटे कौन आसीबो v cos थीटा v sin थीटा इंटू v cos थीटा सो आमे ए फिगर आउट ड्रॉ करिवु ताले एटा हिजबो कोन b एटा हिजबो v sin थीटा सो एटा हला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन गोटे चार्ज मूव करची ए डायरेक्शन रे वेलोसिटी ए डायरेक्शन रे अछि केते एंगल रे आटे थीटा एंगल आटे थीटा एंगल ताहले ई चार्ज केते अछि सपोज q अछि ताहले आ ऊपर केते मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करिवो के कहि परिबो एक रेला मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्शन रे अछि सो ए डायरेक्शन रे मैग्नेटिक फील्ड अछि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लिखि दो मैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to q it directly proportional to b and it also directly proportional to q and also directly proportional to v sin theta so that ki v sin theta perpendicular velocity to the magnetic field
perpendicular velocity to the magnetic field, to the magnetic field, perpendicular velocity to the magnetic field. ताले एठी की कार परपेंडिकुलर आर वेलोसिटी कंपोनेंट दीटा कंपोनेंट हबो, गोटे हबो एटा v cos थीटा, एटा हबो v cos थीटा जोटा कि पैरेलल टू दी b, आउट हबो कौन v sin थीटा जोटा कि परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। बुझीगला कि नहीं? सो एबे आमे कौन लिख परिबा, फाइनली आमे लिखि परिबा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा। लिखि हबो f is directly proportional to q v sin theta. So force is equal to, हमें एटू पुणी आउ गोटे लिखि परिबा फोर्स इज इक्वल टू साइन देलु माने हमें कौन करिवु k गोटे कांस्टेंट लगेबु q v b sin थीटा, फोर्स इज इक्वल टू k q b v sin थीटा। k रो वैल्यू यदि हमें 1 पुट करिवु, पुट द वैल्यू ऑफ k 1, देन केते आसीबो फोर्स, फोर्स रो वैल्यू आसीबो केते q v b sin थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। को फोर्स एटा मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स q v b sin थीटा। बुझिएला? सो मैग्नेटिक फोर्स रो वैल्यू आमे पाई गेलु। आको आमे कौन लिखि परिबो, sin थीटा अछि माने आमे कौन आको एटा गोटे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी रे लिखि हबो कौन f इज इक्वल टू q v क्रॉस b लिखि हबो, v क्रॉस b एटा हला हमारा वेक्टर फॉर्म रे, एटा हबो हमारा वेक्टर फॉर्म रे, वेक्टर फॉर्म एटा हला हमारा स्केलर फॉर्म। बुझिएला? एटा हला स्केलर फॉर्म, एटा हला वेक्टर फॉर्म। आ डायरेक्शन को डायरेक्शन रे हबो कि कहि परिबो, आ डायरेक्शन को डायरेक्शन रे हबो देखो डायरेक्शन कौन हबो परपेंडिकुलर टू दी v और परपेंडिकुलर टू दी b। सो v सहित परपेंडिकुलर हबो, b से भी परपेंडिकुलर हबो। सो डायरेक्शन को डायरेक्शन रे हबो कि कहि परिबो, इते नोट डाउन करने ला। सो डायरेक्शन हमें कहिबा को डायरेक्शन रे हम सो ताला हमें दीटा इक्वेशन पाइलु, गोटे हला वेक्टर फॉर्म रे, गोटे हला स्केलर फॉर्म रे। गोटे हला वेक्टर फॉर्म रे आ गोटे हला स्केलर फॉर्म रे। सो दीटा कौन पाइलो हमें f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, f इज इक्वल टू
क्यू भि बी साइन थीटा एटा को फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जदि आम वेक्टर फॉर्म रे लिखिबा कौन लिखिबा एफ इजिकल टू क्यू v क्रॉस b v क्रॉस b v क्रॉस b एटा हला हमर स्केलर फॉर्म एटा हला हमर वेक्टर फॉर्म स्केलर फॉर्म एटा हला हमर वेक्टर फॉर्म बुझीला एटा हला स्केलर फॉर्म एटा हला वेक्टर फॉर्म ताहले एबे हमें कौन करिवु एबे डायरेक्शन को हमको जानियो पड़िबो को डायरेक्शन ले फोर्स लागुची सो डायरेक्शन पई बहुत ही सिंपल कांसेप्ट यूज करिबा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल for direction for predict the direction we use Fleming left hand rule for direction we use Fleming's left hand rule Fleming's left hand rule कौन करिबो Fleming's left hand rule ओके एटा हला हमरो थंब एटा हला हमरो सेंटर फिंगर फास्ट फिंगर एटा हला हमरो सेंटर फिंगर फास्ट फिंगर क्या को शो करे फास्ट फिंगर शो कहा को शो करे फास्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड कहा को शो करे मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल फिंगर कहा को शो करे सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ चार्ज या डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ आई थंब कहा को रिप्रेजेंट करिबो थंब रिप्रेजेंट फोर्स मैग्नेटिक फोर्स acting on moving charge on the moving charge magnetic force acting on the moving charge बुझेला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले गोटे लिमिटेशन रहउची लिमिटेशन हला limitation it is only applicable it is only applicable it is only applicable for the
for 90 degree, for 90 degree angle. Okay, means three vectors are perpendicular to each other. Three vectors when 90 degree means angle between B and V is 90. B and V is 90. सो यही केस आम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करूँ ना. सो बुझीगला. एबे आम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टे कॉन्सेप्ट जानबू कौन कहवाई चाहूँगी. सो suppose this is north, this is a magnet, this is north, and this is south. A charge is moving perpendicular direction. ए डायरेक्शन रे चार्ज मूव करूची. सो एटी फोर्स को डायरेक्शन रे आसीबो. अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, current is going upward. So current is going center finger टा हमको कौन देखिबो. सेंटर फिंगर इज देखिबो वेलोसिटी. ओके, सेंटर फिंगर वेलोसिटी. अब यही फिंगर टा कौन देखिबो. फास्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड देखेला. आ यही फिंगर टा को डायरेक्शन रे देखिबो फोर्स डायरेक्शन रे. ताले एठी कौन आसीबो फोर्स इनवर्ड आसीबो. फोर्स इज इक्वल टू इनवर्ड टू दी प्लेन. इनवर्ड टू दी प्लेन. टू दी प्लेन. तो फोर्स कौन हम इनवर्ड टू दी प्लेन. बुझेला. जदि सिमिलरली जदि आमर नॉर्थ रु साउथ था और मैग्नेटिक फील्ड बे केस 2 सपोज चार्ज नॉर्थ रु साउथ आसुची. सो कौन करिबा मैग्नेटिक फील्ड कौन हम एबे देखो कौन हम. ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଗର ଡ୍ର କରିଦେଉଛି. ସୋ ଏବେ ନର୍ଥ, ଏଟା ହେଲା ସାଉଥ, ଏଟା ହେଲା. ଏବେ ମତେ କୁହ କୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଫିଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ କରିବ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ फोर्स. सो देख कौन हम मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्शन रे और वेलोसिटी आमर को डायरेक्शन रे गो डाउनवर्ड. ताले आमर एटा को डायरेक्शन रे आसुची थंब टा मैग्नेटिक मूविंग चार्ज ऊपर आउटवर्ड टू दी प्लेन. तमे टिके कॉपी रे ट्राई करो समस्ते. आउटवर्ड टू दी प्लेन. ताले एठी कोन हे जिवो outward to the plane. Outward to the plane. Outward to the plane.
ओके ताला आम लिखिपर फास्ट फिंगर शो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेंटर फिंगर शो करंट डायरेक्शन थंब शो फोर्स एटा लिखौचे एबे ओके एबे कौन करिबा थंब शो फोर्स तो डायरेक्शन ताले एबे कौन हबो सपोज ए चार्ज ए डायरेक्शन रे मूव करूची ताहले एठी कौन हबो एठी हबो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन दिस एठी मैग्नेटिक फील्ड केते आस जिवो 0 आसे जिवो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू फील्ड इज 0 कहीं बिकॉज थीटा इज 0 ओके सो ए केस रे 0 आसला सिमिलरली जदि आमर एटा हला हमर v सो एठी केते आसीबो मैग्नेटिक फोर्स 0 एठी भी केते आसीबो 0 काहे कि बिकॉज थीटा इज 0 दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज 0 बुझियला कि नहीं एबे देबा आमे इंक्लाइन प्लेन रे देखिबा इंक्लाइन एंगल रे एते नोट डाउन हो गला लिखेबा ओके सपोज मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस रे जाउची और चार्ज मूव करची at some angle then what is the direction of magnetic force एठी आसीबो मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू केते आसीबो मैग्नेटिक फोर्स रो वैल्यू केते आसीबो F is equal to QBV sin theta F is equal to QVB sin theta अब आमे ताको कौन लिखि परिबु F is equal to V Q V cross B लिखिबो V cross B लिखिबो क्रॉस प्रोडक्ट रे बे तीनटा एक्सिस नबा ओके एटा एक्स एक्सिस रे कोन होची फ्लो होची हमर मैग्नेटिक फील्ड कले सम एंगल थीटा कम फ्लो होची हमर इलेक्ट्रिक करंट भी ताले कोन हबो को डायरेक्शन ले फ्लो हबो आपको परपेंडिकुलर हबो और v को भी परपेंडिकुलर हबो ताले को प्लेन रे हसिबो
एटा हला v sin थीटा एटा हला एटा हे गला कौन v sin थीटा एटा हला b b एटा हला b और एटा हला v sin थीटा सो हमार एठी एक्चुअली कहा को b क्रॉस b टा कौन हबो v क्रॉस b इज डायरेक्शन ए डायरेक्शन रे आसीबो v क्रॉस b को डायरेक्शन रे आसीबो v क्रॉस b ए डायरेक्शन रे आसीबो ताले को डायरेक्शन रे आसिला v क्रॉस b टा minus z axis এটা this is plus z axis this is minus z axis बुझिएला सो को डायरेक्शन आसला एबे minus z axis सो सेमिति भी हमें ट्राई करले माइनस जेड एक्सिस आछि आ जदि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेबू ताले को हबो मैग्नेटिक फील्ड ए डायरेक्शन रे करंट ऊपर करंट जाउजी हमर v sin थीटा कंपोनेंट केते ऊपर डायरेक्शन रे आ फोर्स टा कोन हबो इनवर्ड मींस ए डायरेक्शन रे फोर्स रहइबो माइनस जेड एक्सिस रे माइनस जेड एक्सिस रे ओके आउ थरे बुझिया को चेष्टा कर एटा सो कौन है किसी डाउट आसुची बोधे इतने देखो कौन डाउट आसुची v रा डायरेक्शन को डायरेक्शन रे रहउची b a डायरेक्शन रे v a डायरेक्शन रे सो b और v आम एमती गोटे फोर्स मैग्नेटिक force is perpendicular to the v and to the both v and b सो प्रथम पॉइंट है ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर हबा बोथ v and b को बुझिएला बोथ v and b को सो आइदर सी अपवर्ड हो पारे मीन्स ये डाउनवर्ड हो पारे सो हमें वेक्टर फॉर्म रे कौन कहूँ b क्रॉस b रु आम आसलु क्रॉस को b रु b को आसलु ताले को डायरेक्शन रे हबो b रु b को आसले माने
ओके एटा जाइथिले अपवर्ड जदि एटा आसे डाउनवर्ड हबो सो माइनस जेड एक्सिस आसीबो माइनस जेड एक्सिस बुझियला जदि हमारा भी ए डायरेक्शन रही था और बी ए डायरेक्शन रही था ताले एबे कौन मैग्नेटिक फील्ड आस्ता एबे जहाँ आसीबो मैग्नेटिक फील्ड सेटा तमे कमेंट बॉक्स रे कहइबो राइट को डायरेक्शन रे आसीबो लिखि दबा एबे जहाँ किसी डाउट अच्छी कमेंट बॉक्स रे कहइबो ओके तापर लिख यदि सपोज ए डायरेक्शन रे मैग्नेटिक फील्ड लागुची ए डायरेक्शन रे मैग्नेटिक फील्ड अछि ए डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ओके ए डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि अपवर्ड कर दवा बेटर अंडरस्टैंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एबे एठी हमर गोटे चार्ज पॉजिटिव चार्ज सी अपवर्ड मूव होउछ ता ऊपर को फोर्स लागिवो एटा ला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एटा ला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एटा हला हमर कोन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोटे हला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गोटे हला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओके गोटे हला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और गोटे हला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मते कुह एबे आ ऊपर को चार्ज को फोर्स लागिवो एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे गोटे फोर्स लागिवो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन रे ताले फोर्स को डायरेक्शन रे लागिवो पॉजिटिव मींस along the electric field F due to electric ओके प्लस आउ गोटे फोर्स लागिवो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ता डायरेक्शन को डायरेक्शन रे लागिवो एटा हला हमर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एटा वेलोसिटी आउ एटा हमर तले को आडू फोर्स लागुची इनवर्ड टू दी प्लेन राइट इनवर्ड टू दी प्लेन सो इनवर्ड को हमें देखिबा कोथरे ए डायरेक्शन रे लागुची इनवर्ड टू दी प्लेन ताले नेट केते फोर्स लागुची आ ऊपरे एक रे गोटे फोर्स अपवर्ड लागुची आउट हला इनवर्ड लागुची इनवर्ड आसुची एटा हला अपवर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज जुगु इलेक्ट्रिक फील्ड जुगु केते फोर्स लागुची एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई मैग्नेटिक फोर्स कौन लगिबो एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा क्यू भी बी साइन थीटा so then the resultant force on the charge particle is combination of both electric and magnetic field combination of both electric and magnetic force so हमें कौन लिखि परिबा F resultant is equal to F electric plus F magnetic F resultant is equal to F electric plus F magnetic so F resultant is equal to हमें कौन लिखि हबो Q V cross B F resultant कितने असला Q E plus Q V cross B बुझियला F resultant कितने असला Q E plus Q V cross B ताहले मते कुआ F resultant को हमें कौन कहू यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दीटा को बोथ एक्टिंग होचंती ऑन ए बॉडी सेतेबेले से फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स को हमें कौन कहू लॉरेंस फोर्स सी F रिजल्टेंट को हमें कौन कहू लॉरेंस फोर्स सीधा कौन कहू हमें लॉरेंस फोर्स बुझियला लॉरेंस फोर्स को केमिति डिफाइन करिवो सेटा को हमें कौन कहू लॉरेंस फोर्स लॉरेंस फोर्स को केमिति डिफाइन करिवो
when a लिख लॉरेंस फोर्स को डिफाइन केमिन करिवो when a charged particle when a charged particle when a charged particle moves in a space moves in a space moves in a space where 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 electric where electric as well as electric as well as magnetic field as well as magnetic field as well as magnetic field both are present both are present both are present then the force acting on it then the resultant force then the resultant force acting on it will be Lorentz force will be Lorentz force will be Lorentz force will be Lorentz force बुझीगला कि नहीं लॉरेंस फोर्स केते बड़े कहबा जेते बड़े बोथ मैग्नेटिक फोर्स आउ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करिवे सेरा को हमें कौन कहबू लॉरेंस फोर्स नोट डाउन हो गला एबे हम नेक्स्ट पॉइंट जीवा लॉरेंस फोर्स बुझी पारलो कौन because some special case note down करो special case if first special case है if v is equal to 0 then force also be 0 because force is equal to qvb sin theta thus a stationary charged particle does not experience
experience any force any force any force in a magnetic field in a magnetic in a magnetic field यदि गोटे स्टेशनरी पार्टिकुलर रेस्ट यदि मैग्नेटिक फील्ड अच्छी भी सपोज द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट अच्छी आप नेट मैग्नेटिक फोर्स केते आसीबो जीरो आसीबो कहीं आसीबो बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स रो वैल्यू कौन क्यू वी बी sin थीटा सो G is 0 because V is 0 okay so second point लिखो if theta is 0 degree या 180 degree 0 degree या 180 degree then force F is equal to 0 को फोर्स नो चाहे मैग्नेटिक फोर्स ना मैग्नेटिक फोर्स thus a charge particle moving parallel or anti-parallel moving parallel or anti-parallel to the magnetic field does not experience any force in the magnetic field थर्ड पॉइंट लिखो if theta is 90 then Fm is equal to QVB sin 90 is equal to FQVB कौन लिखिबो thus a charge particle experience कौन करिबो charge particle experience the maximum force when it moves perpendicular to the magnetic field
परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड बुझीगला कि नहीं एटा ओके जहार भी किसी डाउट थी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो जाफल कि आमको भी जना पड़ो कि कौटी बेसी डाउट रोचे से अनुसार आम एक्सट्रा क्लास नहीं कि आम से डाउट को क्लीयर करने ट्राए कर आदि किसी इम्प्रूवमेंट चाहूच देन आमको फीडबैक रे लिखो कि कौन इम्प्रूवमेंट हेले बेस्ट हम ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे देखा आज का क्लास मत लगुच आज यूट्यूब ही रखीदे बहुत लेंदी क्लास हो गला 1 आवर एभव हो सो नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा टेस्ला विषय किसी मैग्नेटिक नेक्स्ट क्लास किसी मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एटा बुझीगला।